बुलेटिन में खुश आमदी। सबसे पहले बात करेंगे लीगी क़यादत को मिलने वाले बड़े रिलीफ की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ खड़ा किया गया करप्शन का झूठा बयानिया ज़मी बोस हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवनफील्ड रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। अदालत ने दोनों को बरी करने का हुक्म दिया है। नैब कोर्ट से सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई। कैद, जुर्माने और नाअहली की सजाएं कलअदम करार दे दी गई। अदालत ने करार दिया नैब मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा कलअदम करार दे दी। इलेक्शन लड़ने और अवामी ओहदा संभालने के लिए 10 साल की नाअहली भी खत्म हो गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नैब कोर्ट से 1 साल सजा को भी अदालत ने खिलाफ कानून करार दे दिया। दोनों ने नैब कोर्ट से सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अहम केस की आखिरी समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि वाजिद जिया की आरा पर सजा सुना देना समझ से बाला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, नैब जो सबूत दिखा रहा है इस पर तो कोई अदालत दावा या डिग्री भी जारी नहीं करती, सजा तो बड़ी दूर की बात है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इल्जाम लगाना आसान है मगर नैब शवाहिद की रोशनी में इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। दयानतदारी की बात यह है कि नवाज शरीफ का भी इस जायदाद से कोई लिंक सामने नहीं आया। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। फैसला आते ही नून लीगी कारकुनों ने मरियम नवाज के हक में भरपूर नारेबाजी की और मिठाई भी तकसीम की। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ सुरखरू और इमरान खान नाकाम हुआ। अदालती फैसले के बाद लीगी नायब सदर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान के कोच का काम भी खत्म हुआ। इसहाक डार की तरह नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापस आ जाएंगे। तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू की। नवाज शरीफ को फाउल प्ले के जरिए मैदान से बाहर करके आए, क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता। इसके दूसरे जो उनके कोचेज हैं अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी खत्म है। टूट का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। मैं आज उससे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया, अब तुम क्या करोगे। इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बुहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला। डार साहब जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया। इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ऑडियो लीक मामले पर इमरान खान को गिरफ्तार करने और तहकीकात के लिए मुश्तरका तफ्तीशी टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान किसी का लाडला होगा, हमारा नहीं। फितने से इस मुल्क को बचाना हमारा फर्ज है। साजिशी से इस मुल्क को बचाना हमारा फर्ज है। ये फर्ज हम पूरी कुव्वत से अदा करें। इस किस्म के शवाहिद आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। किसी का लाडला अगर होगा तो होता रहे, हमारा लाडला वो बिल्कुल भी नहीं। तब उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह पैनामा में JIT ने रोज की बुनियाद पर काम किया था, इसी तरह हाई पावर JIT बनाई जाए, जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों। इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी साहब सफ़ीर थे उस वक्त के, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर हमें सबको ना आंखें बंद करके घर जाके कंबल लेके सो जाना चाहिए। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। जालसाजी की बेस पर अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा। उसी जालसाजी की बुनियाद पर वो ये सब करता रहा। सब इदारे और हम सब बैठकर हुकूमत समेत ये सब तमाशा देखते रहे। ये है कौन जिसको इतनी खुली छुट्टी मिली हुई है। शर्म इमरान खान को आनी चाहिए, क्योंकि मेरे दामाद की जो मशीनरी आई थी वो इमरान खान के दौर में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है।
वज़ीर आज़म ने नहीं, इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सरबराह तहरीक इंसाफ ने साइफर के मामले पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। उन्होंने खतरनाक खेल खेला। हुकूमत इस पर तहकीकात करेगी। खान साहब ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की है मौजूदा वज़ीर आज़म ने। मेरे लिए तो हैरान कुन था ये इंकशाफ उनका। ऑफिशियल सीक्रेट की अगर कोई वायलेशन है तो खान साहब को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए, उनसे हुई है। वज़ीर दाखिला की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई जिसका सिर्फ और सिर्फ मैंडेट है कि वो ये सुराग लगाए कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई, कैसे हुई, इसके मकासद क्या थे, इसके किरदार कौन कौन से हैं। टास्क दिया गया वो वजारत कानून और इंसाफ को दिया गया, वो लेजिस्लेटिव साइड पे है कि सजेस्ट करें कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट की अगर ज़रूरत है तो वो किस शक्ल में होना चाहिए। ऑडियो लीक के बावजूद इमरान खान की ढिठाई बरकरार है। बोले, अब सारी दुनिया को पता चलेगा कि साइफर एक हकीकत है। अरबों रुपए चोरी करके डील के तहत वापस आने से बड़ी कोई तौहीन नहीं हो सकती। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। शहबाज शरीफ तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था वो हकीकत है। आपने किया तो मुझे नुकसान पहुँचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बेड़ागर्क कर दिया। इशाक डार जब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर बना उनका दिवालिया निकाल के गया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। सुल्तान सिकंदर, मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है रिजाइन करो और हम हर कानूनी कार्रवाई तुम्हारे पे करेंगे। कभी अरसलान बेटे के जरिए गद्दारी के सर्टिफिकेट तो कभी मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें। इक़्तिदार की हवस में तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुल्क की सलामती को भी दाव पर लगा दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सर ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, ट्रेंड बना देना है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी होगी। कारकर्दगी नहीं प्रोपेगेंडा, दलील के जवाब में गाली, सवाल के बदले गद्दारी के हैशटैग। से भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके मुझे और जो वो फरा है ना उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। वो भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा जाती मुफाद को मुल्की मुफाद से बालातर जाना। पाकिस्तान को दिवालिया करने का खेल रचाया गया। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं इक्तिदार की हवस में अंधे होकर पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तन्हा करने की साजिश की गई। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मिला, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। तहरीक इंसाफ की सियासत को देखकर किसी ने सच ही कहा था। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मरियम नवाज की बरियत के फैसले के बाद साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने बेटी को मुबारकबाद पेश की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, उम्मीद है नवाज शरीफ के खिलाफ भी इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अब जी आप, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है और अल्लाह ताला ने आपके मुखालिफिन को आज अल्लाह ताला ने नाकाम किया है, नामुराद किया है। सियासी इंतकाम के अंधेर नगरी चौपट राज खत्म हुआ तो मुबारकबाद का तांता बन गया। 7 समंदर पार वालिद नवाज शरीफ ने बिटिया रानी को मुबारकबाद दी। मरियम बीबी की आवाज भर आई। इंशाल्लाह अभी हम वो दिन जल्दी देखेंगे। अल्लाह ताला आपको इज्जत से अपने मुल्क वापस लेके आएगा। फैसला आते ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी नायब लीगी सदर को मुबारकबाद देने में देर न की। अदालत से दौड़ी खुशी की लहर, गली मोहल्लों और इक्तिदार के ऐवानों में भी शीरी बिखेरती रही। झूठ, बहतान और किरदार कुशी की मारत मुनहदम होने पर पूरी मुस्लिम लीग नवाज रब का शुक्र बजा ला रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को उम्मीद है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जज की गवाही पर भी इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे।
وہ دن دور نہیں جب میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی ہوگی۔ نواز شریف سے ملاقات کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، بولے ہماری بے گناہی ثابت ہو گئی ہے۔ صاحب کی واپسی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں، مریم کی بریت آ گئی ہے، صفتر کی بریت آ گئی ہے، تو وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے اپنے وطن واپس جائیں۔ ہماری بے گناہی ثابت ہوئی ہے، عدلیہ نے ثابت کی ہے ہماری بے گناہی جو ہے۔ بالکل اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کریں گے۔ جو ملک جہاں پہ آج کھڑا ہے اور پچھلے 3-4 سال کی جو کرپشن ہوئی ہے، جو لوٹ مار ہوئی ہے، جو وزیر اعظم کا اہل خاندان جس طرح لوٹ مار کی ہے، ان کا کون حساب دے گا؟ اور عدالتی فیصلے کے بعد مبارکبادوں کا تانتا بن گیا۔ بلاول بھٹو اور چیئرمین پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کو فون کر کے مبارکباد دی۔ تفصیل جانیں گے نمائندہ خصوصی عثمان خان سے۔ عثمان بتائیے۔ جی بالکل، چونکہ مسلم لیگ نون اور خود شریف فیملی کے لیے ایک بڑی خوشی کی گھڑی ہے، اور ایسے موقع پہ اتحادی جو ہیں وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کو فون کیا اور اس ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہونے پر دونوں شخصیات کی جانب سے مریم نواز کو مبارکباد دی، اور دونوں رہنماؤں نے مریم نواز شریف کی قانونی اور سیاسی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا، اور دونوں رہنماؤں نے مریم نواز سے گفتگو میں کہا کہ آپ نے سیاسی انتقام کا، بہادری، حوصلہ اور استقامت سے مقابلہ اور نیک کیا ہے۔ خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا۔ عثمان تفصیل کے لیے شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے مریم نواز کی بریت پر تشکر کا اظہار کیا ہے۔ لندن میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دلا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے، کئی سال پہلے بلکہ میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو جب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اگر انسان سچا ہو تو اللہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ماشاءاللہ دکھا دیا، حق اور سچ کو دکھا دیا، پوری قوم کو دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ روڈا پروجیکٹ کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ پروجیکٹ کی منظوری دینے والے محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے ہی منصوبے کی ذمہ داری نہ لی۔ آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایگزیکٹو پروڈیوسر ذوالفقار علی مہتو کی رپورٹ دیکھیے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ برائے سال 2021 نے روڈا پروجیکٹ کا کچا چٹھا کھول دیا۔ منصوبے کی منظوری دینے والا محکمہ اونرشپ سے ہی مکر گیا۔ ذرائع کے مطابق روڈا اسکیم کے اصل ماسٹر مائنڈ عمران خان، فرا گوگی، اسلم اقبال اور ایس ایم عمران ہیں۔ رپورٹ میں منصوبے پر بڑے اعتراضات لگائے گئے ہیں۔ آڈیٹر جنرل نے سوال اٹھایا ہے کہ رابی کی سلابی گزرگاہ میں 5000 ارب کے میگا منصوبے کی منظوری کیوں دی گئی؟ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کابینہ اجلاس میں بحث کے بعد رپورٹ دبا لی۔ اسے پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی چھپایا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق سیکرٹری ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ محکمے نے منصوبے کی منظوری تو دی، مگر انتظامی کنٹرول سیکرٹری عمل درآمد اور کوارڈینیشن کے پاس ہے۔ ذوالفقار علی، سما، لاہور۔ روڈا ایکٹ میں ملکی اراضی غیر ملکیوں کو بیچنے کے لامحدود اختیارات کا انکشاف سامنے آ گیا۔ ریاست کے اندر ریاست بنانے کے گھناؤنے منصوبے کی اہم تفصیلات جاوید فاروقی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بنی گالا لوٹ مار پروجیکٹ، سونے جیسی زمین ہم وطنوں سے چھین کر غیروں کو دینے کا منصوبہ۔ روڈا ایکٹ میں لامحدود اختیارات کا انکشاف، ریاست کے اندر ریاست بنانے کے گھناؤنے منصوبے کی اہم تفصیلات سما سامنے لے آیا۔ دستاویزات کے مطابق روڈا اتھارٹی کو پیپرا رول سے آزاد کر دیا گیا۔ اتھارٹی قیمتی زمین کسی بھی غیر ملکی کو بیچنے میں خود مختار ہوگی۔ ایکٹ میں جوائنٹ وینچر کے لیے روڈا کے سی ای او کو لامحدود حتمی اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ روڈا اتھارٹی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اپنے رولز بنائے گی۔ معاہدوں پر پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ کا نفاذ نہیں ہوگا۔ ماہرین نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لامحدود اختیارات ملک کی سلامتی کے منافی بھی ہو سکتے ہیں۔ روڈا اتھارٹی کے غیر معمولی اختیارات سے اراضی کی ملکیت کے حوالے سے لاہور میں غیر ملکی جزیرے بن جائیں گے۔ جاوید فاروقی، سما، لاہور۔
रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से लंबी दिहाड़ियां लगाने का मंसूबा बेनकाब हो गया। 50 लाख घर बनाकर देने के दावेदार साबिक वजीर आजम ने 11 लाख किसानों के सर से छत छीन ली। तहरीक इंसाफ वालों ने नाइंसाफी की बदतरीन मिसाल कायम कर दी। रावी के किनारे नया शहर आबाद करने के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा। कब्जा करने के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया। रूडा के जरिए करोड़ों रुपए की जमीनों का रेट कम कर दिया गया। 90 लाख रुपए फी एकड़ जमीन का रेट सिर्फ 3 लाख रुपए मुकर्रर किया और फिर सेक्शन 4 का तौक किसानों के गले में डाल दिया। किसानों पर रूडा के सिवा किसी और को जमीन फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी। ये सब किसने किया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इंसाफ का नाम लेकर इंसाफ फरोशी की बुनियाद रखने वाला साबिक वजीर आजम, जिसने अवाम से 50 लाख घर बनाने का दावा किया था। यू टर्न के लिए मशहूर इमरान खान ने यहाँ भी यू टर्न लिया। घर देने की बजाय 11 लाख किसानों को बेघर करने के लिए रूडा बना दी। रूडा ने न सिर्फ किसानों की फसलें रोंदी बल्कि जमीन ही हथिया ली। किसान इंसाफ की दुहाइयां देते निढाल, कोई मदद को न आया। रूडा ने अदालती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। जबरदस्ती अंगूठे लगवा कर जमीन हथियाने का सिलसिला जारी है। किसानों को अदायगी भी पूरी न हो सकी। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत पर मुबारकबाद। कहा, पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ को भी जल्द इंसाफ मिलेगा। अब सबका एहतसाब होगा। 5 साल में मुल्क के साथ जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनना चाहिए। और पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर अमरीकी सिफारतखाने में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। तकरीब में सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती। अमरीकी सफ़ीर का मुतासरीन की मदद जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Known as PL 480. Now PL 480 was a program under which Pakistan received, I believe, wheat parcels from United States. And that's how this long journey of friendship started, and it touched epics of glory, and at times, it dipped to low points. We know the reasons, and this is not the time to go into those reasons. We have been discussing it privately and publicly during different points of time. But let me say very sincerely and honestly that we really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect, and mutual understanding. Of course, there is a file on your part and there's a file on our part. But if we have to move forward, and we must, then I'm sure we'll find ways and means to warm up our relations to levels we have seen in the past. And I think you made a very pertinent point that our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. Our relations, they stand on its own. And you have enumerated various programs and projects. I would add on to that. When Pakistan was facing worst kind of power outages, Prime Minister Nawaz Sharif decided to spend from our own scarce resources to invest another 5,000 megawatts. Finance Minister Ishaq he opposed it tooth and nail. He said, I don't have the money. But obviously, now this is democracy. He had his own pertinent point, and Prime Minister Nawaz Sharif thought, no, on top of what we are getting in terms of CPAC projects, let's not delay it, because if there is another dharna, so to say,
then this CPAC program will be derailed, and by the time of elections 2018, we wouldn't be able to show anything to the people of Pakistan. And Mr. Mehboob will be our very, severe critic that what this government has done. So what I'm saying is, as a result of that program, that decision, 5,000 megawatts, out of that 3,500 megawatts was installed by GE, United States blue chip company. And it was the most transparent investment, and the prices were the lowest in the world. It can't be beaten as I speak. And in the fastest possible time, these plants were installed. That's how we want to rebuild our friendship. In terms of transparency, in terms of trust, in terms of mutual respect. And I want to assure you, my friend Ambassador, that I'll be the most ardent supporter of this friendship. Let bygones be bygones. As I said, there is a lot you would want to say or your side would want to say, and on our side. But as long we open this and renew this friendship through honest dialogue, through sincere dialogue, and serious dialogue, I can tell you we will not go wrong. And I was in Washington, New York, with my colleagues, had very productive, short but very productive meetings with Secretary Blinken, and of course my meeting with President Biden was again very reassuring. I thank them. I want to thank again for the support, for the program which you have offered to flood-affected people, $53 billion, and now add on to it $10 million announced by Secretary Blinken, meeting our young and enterprising Foreign Minister Bilawal Bhutto. We are very thankful to you. But then I have to say and make a couple of comments. One, that this disaster, Ambassador, is not of our making. We are a developing country, and you mentioned that United States contributed $32 billion to Pakistan in the past, which is correct. And I tell you honestly, without any fear of contradiction, that had we used these $32 billion in the right direction, properly, well planned, and properly supervised, we would have broken our begging bowl, honestly. But then there's no point in crying over the spilt milk. Let's move forward. We want to stand on our own feet through dint of hard work. We will burn our midnight oil. We will work untiringly. And this nation, Pakistani nation, is a very strong nation. People are very courageous, very brave, very hardworking. Our population is a mix of 50% male and 50% female. They are no more coffee-going folks. They are now very educated, very hardworking. They are bankers, they are scientists, they are teachers, and they are politicians. 2 politicians, 3, 4, 5 sitting in front of me. This is Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, where there's complete freedom of action, and I think their contribution is not only valuable, but extremely, extremely helpful. So what I'm saying is, Ambassador, United States is our biggest trading partner. You have been extremely kind, and your teams have come to Pakistan. The head of USAID, who just had her birthday, and I congratulated her and said many, many more such occasions. She was here, she went to the flood-affected areas,
She visited and she was absolutely devastated. She said, Prime Minister, this is horrifying. And then her visit was equally matched by actions, by practical actions. We are very grateful. But the point at issue is that this catastrophic situation is not made by us. It is man-made, but not made by us. And as I speak, 4 million acre area where standing crop of cotton, rice, sugarcane and date, all gone. Billions of dollars. 1,600 people have left this world, along with 400 children, girls and boys. More than 1 million, mud houses or pakka houses, they have been absolutely thrown to the Arabian Sea. And more than 1 million livestock drowned. Life savings of people have gone away. And they are living under tents and under open sky, waiting for help coming from somewhere. And it is our duty, moral duty, my political duty, my responsibility, my colleagues, my governments, all outfits, departments, authorities, institutions. We are working hard and working overtime to serve them. But whatever we do is not enough. The yawning gap between demand and between requirement and supply is widening by the hour. And this is the first phase. And the final phase has yet to come, phase of rehabilitation and reconstruction, in which Sherry Rahman Sahiba always keeps on telling me it has to be, Prime Minister, resilient infrastructure, it has to be adaptive. And of course she's right. And that costs money. There's no free lunch. Therefore, I would, again request you, as a friend, you are a great friend, and your country has supported Pakistan, in a very big way. It is clear, loud and clear to all and sundry, that now we need international community to stand by us and support us. We're not asking for sums of monies. We're asking for relief. We're asking for funds to rebuild our infrastructure. We're asking for our people that they get their jobs back, livelihood, agriculture, industry, commerce, trade, export. For that we need incentives, relief, moratoriums. This is our right. We have not brought this disaster upon ourselves. It's nature. We are not blaming anybody. We are a country which is under 1% of carbon emission. So I wouldn't want to go into details and have a lengthy speech. Obviously, I think soft drinks are waiting for them. Soft drinks, I mean. And of course, snacks, of course, they're waiting for them. What I'm saying is that we want to build we want to go back to those wonderful times with the United States of America, where our relations were not beholden to others. It had its own standing, own structure, and I would work most willingly to build that relation. Thank you very much. पाकिस्तान अमरीकी दोस्ती जिंदाबाद। मुश्किल हालात में अमरीका ने पाकिस्तान की हमेशा मदद की। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब कर रहे थे।